Assalamu alaikum. Good evening. Welcome to CxO TV on CxO Global Forum. Welcome to our episode of the Trailblazers, where we get in the trailblazers of the industry and talk about various topics. And these experts are panelists who are C-level executives, are people who are mentors and coaches. The topic today is the importance of mentoring and coaching. A mentor is a person who basically uses his skills, knowledge, and experience to guide an individual or an organization to achieve their goals. A coach, on the other hand, is a person who gives the roadmap, gives the necessary ingredients that are required for that person or that organization to achieve their goals. We will be talking about the difference of mentoring and coaching. We will also be talking about with these experts who are mentors and coaches in their own fields and in general, and try to understand the importance this has on our Pakistani market, local market, and the corporate sector. Without further ado, I would like to introduce our guests, Mr. Tanveer Ahmed. Assalamu alaikum, Tanveer Saab. Tanveer Saab is the CEO of AnaConEx. Welcome to the show and thank you for your time. Thank you. Tanveer Assalamu Saab. alaikum and thank you for inviting me. Next up, we have Mr. Zeeshan Ahmed. He's the CEO of Askari Enterprises. Assalamu alaikum, Zeeshan Saab. Welcome to the Alaikum, show. Alaikum Shazad, Alaikum Tanveer. Thank you for the invite. Thank you. Without further ado, like I said, I would like Mr. Tanveer to shed a light on the difference between a mentor and a coach. Well, thank you very much for inviting me for this show, especially. Or as you just mentioned in your opening remarks, that these two differences between the mentoring and coaching is from the uh, word meanings is different, but for me, it's actually making the same kind of services or same kind of impact on the people. Like we are in very initial basis and initial times, so we always looking for mentors, especially. और हमारे कल्चर में जो मेंटोर का जो रोल है वो हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और कोचिंग पीपल आर नॉट रियली रियलाइज बट हम अपने बड़ों के साथ और उनको साथ उनकी इंस्पिरेशन के साथ जो ना उनकी उनकी नॉलेज शेयरिंग के साथ हम आगे बढ़ते रहे. Coaching definitely is another very important part. Sometime मैं जब ज़ाहिर अपने स्कूल टाइम की अगर बात करूँ या अर्ली एजेस की बात करूँ तो उस वक्त हमारे पास कोचेस में स्पेशली हमारे टीचर्स ही हुआ करते थे. उस वक्त शायद प्रोफेशनलिज्म में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर जो एम्फसाइज नहीं किया जाता था. ऑल्दो सब फ्रॉम द अदर मीनिंग्स तो कोचिंग और मेंटोरिंग होती थी, लेकिन इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं था. लोग स्पेसिफिक True, true. एडवाइजेस के तौर पे जो ना वो काम किया करते थे और ट्रेनिंग्स हुआ करती थी वो विच इज ऑन अ वेरी डिफरेंट स्केल्स. लेकिन बाय द टाइम पीपल रियलाइज दैट मेंटोरिंग एंड कोचिंग इज नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज बिकॉज कि आपके पास इतना स्टफ है, इतनी चीज़ें, जिसके बाद अब आपके पास मेंटोर और कोचेस की एक स्पेशल फील्ड बन गई है. सो ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो अपने बिजनेसेस के अंदर दे परफॉर्म रियली वेल, सो यू कैन और अगर आप उसी स्पेसिफिक फील्ड में और प्रोडक्ट और सर्विसेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एज ए मेंटोर और कोच उनको अगर आप सेलेक्ट करें तो वो आपकी कैरियर के लिए और आपकी कैरियर ग्रोथ के लिए रियली इम्पोर्टेंट. सो Okay. अगर आपके पास कोई अच्छा मेंटोर है और कोच है, जो कि बहुत सारे लोग, शायद मैं ये समझता हूँ अभी इस एरिया के अंदर उन लोगों को थोड़ा सा रियलाइज करने की ज़रूरत है कि जो प्रोफेशन के अंदर है और उनको इस बात की अहमियत को भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है कि कोचिंग और मेंटोरिंग उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है. बिकॉज कि ये हर दफ़ा हर ज़माने में कोचिंग और मेंटोरिंग की तो अपनी अहमियत रही है, लेकिन जो एक्चुअली जो लोग इससे जो भी बेनिफिट ले सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो उनके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको सीरियस लेना. बिकॉज के जब तक वो इसको सीरियस न लें और जो उनको मेंटोर जो उनको चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे और जो शेयरिंग करे और जो उनको कोच गाइड करे, जब तक उसको सीरियस नहीं लिया जाएगा
तो बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए जो भी इसकी डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना और उससे जो ना बेनिफिशियल होना थोड़ा सा मुश्किल काम है. सो ज़ाहिर है ये अंडरस्टैंड करना कि कोच और मेंटोर का डिफरेंस क्या है. सो उसके अंदर डेफिनेटली जो एक्सपर्टीज़ अगर आपकी किसी स्पेसिफिक फील्ड में है तो आपको मेंटोर उसी स्पेसिफिक फील्ड से लेना चाहिए और कोच भी, ताकि आपको प्रोफेशन में स्पेशली जो ना वो थोड़ा सपोर्ट रहे. Great. Thank you for the detailed answer. Zeeshan, same question for you. Difference between a mentor and a coach. Yeah, I think I look at a little more simplified तरीके से, and I look at myself growing up. Mentor is that person you want to be. It's very simple. जी. Mentors आपको नहीं ढूंढते, आप mentors को ढूंढते हो. True. It's very simple. You look at people, it could be your school, it could be your friends, it could be your family, it could be your work life. You look at people, you like people, you want to be like them, and you yourself put them in a place of mentorship. Okay? So True. that is what a mentor. The difference between a mentor and a coach is कि mentor की habits आप emulate करते हो, and a mentor will not necessarily teach you everything right. There's a very dark, very clean comment on that. Because you want to be like someone, and if your choice of a mentor is not wise, per se, you end up being that way. A coach is a person who will give you a particular skill set. It could be talking skills, it could be people skills, it could be business skills. So a mentor can be a coach, but a coach can necessarily not be a mentor. Very That's nice. look at it. Very nice report. When I was in college, when I was doing my A levels, so I would share my example, like Zeeshan said, and adding to that, I had a teacher who was an accounting teacher. He formed a relationship with me, and because my name is Shazad Sikandar, and he came up with the idea that Sikandar is Alexander, and Alexander ka beta jo hai wo junior hai, so he called me Alexander Junior. And the way he taught, he became my mentor. It was somebody that I was seeking out. It was that individual, and I'm talking about somewhere in 1995, 96, which led me to an interest in teaching, and I ended up teaching for 16 years. Very good. Because I was inspired by that mentor. He did not give me teaching skills like a coach. He did, and it was just a 2-year arrangement. Then I found another mentor, one of my teachers, who later became my boss. That person reminds me of what Zeeshan said. I absolutely emulated that person, and it is not necessarily that you actually want to be that person at the end of the day, but when you are looking for a mentor, then you become like that person, or you try to be that person. And the mentor may not necessarily teach you, but it is through that aspiration or the inspiration that that person gives that you actually want to pursue them to be a mentor. When I was getting the list of questions, which is generally how we plan shows, I got a question which was, what are the benefits of coaching and mentoring? And it seemed like I have to give an exam, and then I will give this exam to my panelists. So I'm going to strike that question off and move on to something a little more interesting and ask you, starting from Zeeshan and then Tanveer Saab, मुझे सब पता है, मैं एक सेठ हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक सी लेवल एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ, मुझे सारा पता है, आप मुझे क्या बताएंगे? मेरे लिए तो बड़ी एम्बैरेसिंग बात है कि मुझे कोई कोच आके ये बताएगा कि मैंने क्या करना है, मेरी कंपनी के बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में, या मेरे लाइफ के बारे में. This is a Pakistani mindset that I believe. Can you help me change this mindset, starting from Zeeshan Saab and Tanveer? So that I have worked closely with that mindset in a few places, and it always starts like this. When they feel they need your input, they will make all the promises under the sun. And I'm talking very big people. Why do I feel this is not the first time I'm hearing this? So hear this rodeo. It's a rodeo, right? कि जी नहीं हम सुनेंगे करेंगे, और वो तब तक सुनते हैं जब तक the opinions are in concurrence. The minute the opinions take a separate change, that's where this attitude kicks in. And
I'll tell you, in these situations, what I've learned is they don't need a mentor or a coach so much. They need they need someone who's got a very strong EQ, because at the end of the day decision एक ही होनी है, या तो उनकी या आपकी. बिल्कुल How सही. you get them to arrive at that decision, then you have to keep remolding and reevaluating yourself and redriving yourself. True. So the answer to that solution is that person cannot change because he's been like that for 40 years now. You make the best of a bad situation. But I'll tell you, the younger C level that is out there, they understand the value of having people who have opposing opinions. And when you have the ability to absorb opposing opinions, you're okay to teach your opinion and be taught. True. Because one last thing, I think, for the audience, a mentor or a coach doesn't always necessarily have to be someone senior than you. Yes, that is very, very मुझे important. मुझे Yes. आज भी हो सकता है, और बहुत बार हुआ है मेरे करियर में, कि जूनियर्स ने सिखाया है. बिल्कुल. Their opinion and their decision has been stronger or brighter than mine. It is my place as a good leader to recognize that and implement it, not fight it. As they say that teaching, आपने being taught and teaching की बात की, when you enter a classroom, teaching stops and learning begins. So if you are open to learning, regardless of what your designation is, what your position is, then you are open to mentoring and coaching. इस mindset के बारे में तनवीर, what do you have to say? नहीं, बिल्कुल आप ये बात दुरुस्त कह रहे हैं. एक्चुअली बिकॉज कि इट्स वेरी मच रिलेट टू दी ह्यूमन बिहेवियर्स, ठीक है ना. और जिस पर्टिकुलर सिचुएशन की आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो सम टाइम वो भी आता है कि जब आपके साथ कोई सामने ऐसा बैठा हुआ है जिसके साथ आपको नेगोशिएट करना है, और मे बी आप यू आर हेयर टू टीच हिम और मेंटोर हिम, बट वो ही इज नॉट रेडी टू दैट. सो वो बिकॉज कि कोई अपने किसी डिफरेंट माइंडसेट के अंदर है, तो यू हैव टू बी वेरी यू हैव टू बिकम अ फ्रेंड फर्स्ट. You have to become a friend first. You have to align your wavelength with him, और उसके अंदर कोशिश की जाए कि उनके साथ आप वो जो भी हमें कभी सेल्स में कभी समझाया गया था शुरू के अंदर कि इफ यू आर गोइंग फॉर ए फ्रेश कस्टमर, सो उसके साथ बिल्कुल स्ट्रेट अवे बैठ के तुम जो है ना वो सेल्स की और जो है ना वो अपने प्रोडक्ट की बात नहीं करो. ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इनटू समथिंग एल्स, लाइक सर आपकी मसरूफियत क्या है, व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, और where you learn from, और you वहाँ कॉलेज कहाँ से आपका है, एंड यूनिवर्सिटी कहाँ से है. सो ट्राई टू गेट इन्वॉल्व विद हिम. और ज़ाहिर है ये एक ह्यूमन साइकी है कि थोड़ा सा आपको जो ना उसको प्राइस करना पड़ता है कि जी जहाँ से आपने किया इट्स रियली गुड, और जो स्किल्स हैं उनको आप ज़रूर फाइंड आउट करें उसके अंदर. इफ़ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इफ़ यू हैव अ गुड इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट कि उसमें तो थोड़ा सा प्राइस करें. सो इस तरह की सिचुएशन में लेने के बाद आपको पर्सन टू पर्सन जो यू कैन हैंडल द सिचुएशन. एंड इफ यू कैन टॉक अबाउट द बेनिफिट, सो डेफिनेटली द क्वेश्चन इज आपका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन वो ये कि बेनिफिट के हवाले से है कि डेफिनेटली मेंटोरिंग के बेनिफिट्स इस हवाले से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बिकॉज के फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार आपको लर्न करना है, चीज़ों को सीखना है. अगर इफ़ यू आर समवेयर, अगर जो हमारे ऑडियंस में कुछ ऐसे जो ना लोग मौजूद हैं जो कि भी यंग हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि आपको लर्न करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दी एफर्ट्स योर मेंटोर एक्चुअली पुट इनटू इट, और आप उसको रियलाइज करें कि कितना काम है. सो जब तक आप उसको प्राइस नहीं करेंगे अपने पेंटोर को, या अपने पेंटोर को आप जना जब तक आप टाइम या वैल्यू नहीं देंगे, तो तब तक आप उसकी जो मेंटोरशिप है उसको वो जो बात कह रहा है उससे उसका असर आपको नहीं होगा ज़्यादा. सो इन चीज़ों का अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने मेंटोर को या अपने कोच को सिलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज कि सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, और अगर आप किसी को एज ए मेंटोर इवेल्युएट कर रहे हैं, तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि उसको जब इवेल्युएट करते वक्त जो आपको जो बेनिफिट उससे चाहिए, क्या वो उसने उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्या वो उन चीज़ों से गो थ्रू किया हुआ है. तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि अगर आप अपने मेंटोर को सिलेक्ट करने से पहले, बिकॉज के सम टाइम इन प्रोफेशनलिज्म आपको अपना मेंटोर सिलेक्ट करना पड़ता है, एंड
आपके ऊपर डेफिनेटली कोई फोर्स नहीं होता कि यू कैन यू हैव टू बी फॉलोइंग दैट काइंड पर्सन। और कोचिंग के अंदर भी अगर आप के पास चॉइस है कि आप तो आप इवेल्युएट करें अपने मेंटोर को, अपने कोच को। नाउ डेज लॉट्स ऑफ ट्रेनर्स अवेलेबल ऑनलाइन, और जो है ना वो ऑन ऑन साइट भी तो ज़ाहिर है, जिनसे आप इंस्पिरेशन है या जिनकी जो भी सक्सेस और अचीवमेंट है उनको आपको अंडरस्टैंड करते हैं, तो देन आप उनकी बात को सुनेंगे तो उसका एक बेनिफिट अलग होगा। और तभी आपको रियलाइज होगा कि आपकी उनकी जो मेंटोरिंग में आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और कोचिंग में क्या मिल सकते हैं। सो सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिलेक्टिंग कि आप किससे मेंटोर होना चाहते हैं और आप किसको मेंटोर बनाना चाहते हैं, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स हैव सम फन बिफोर वी मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस। जीशान, इफ यू वर टू मेंटोर मी and you have the next 3 minutes to evaluate whether you are the right mentor for me, or what would you look for before deciding that you can or cannot or would not want to mentor me? I have a very simple question I ask a lot of kids. Huh? And I have first question is, Very correct. I'm not a kid. I don't look like a kid. So yeah, what is your definition of humanity? ये मेरा सबसे पहला सवाल होता है. zabardast, zabardast. My answer to that would be keeping people satisfied, happy, and in a nice environment. So it's happiness, satisfaction, So, and keeping people connected. actually, Shazad, I get this answer at least 80% of the time. Huh? So that's why I have a follow-up thing to say. Is that good or bad? No, it is it. It's a fact, right? Now, plus mein na, minus mein. So my second thing to that is कि the biggest lesson to learn in life is that you will not be able to make everybody happy and satisfied. But But what I you didn't can, say everybody. but, I didn't but say everybody. you said people, right? So that's Yeah, your and majority. That's your majority okay. right there, right? So my second to that is कि यार, if you really want to be a good human, be truthful to people. Don't be hurtful, but be Truthful. truthful to people. And when you're truthful to people, you don't realize, but you end up mentoring them every single time because you gave them the truth or the guidance that they needed every time. I hope that it's good guidance every time, but sometimes people need to hear the bad to be able to Which is come good. So that's my 2 minute elevator pitch mentoring to you. Acha. Tanveer Saab, maybe, and taking this elevator pitch forward, um, maybe I feel that your experiences and learnings out of those experiences are very individualistic. And I think Zishan here would agree with me. Everybody's life and learnings are very, very individualistic. How they respond to the same stimuli. I mean, how Rizwan, how Tanveer, Zishan, and myself, I would respond to a similar stimuli would be very different based on our experiences. Now, when these experiences are different, how do you do this matchmaking between a coach or a mentor that I am looking for? वेल एक्चुअली ये एक बड़ा असल में देखें, ह्यूमन बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सिचुएशन। अब आप जब कभी किसी को मेंटोर करने जा रहे हैं या किसी को जो ना वो आप कोच करने जा रहे हैं, तो दैट्स ह्यूमन बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन कि उसका बिहेवियर क्या है। और अगर वो अननोन है, आप किसी ऐसी सेशन में चले गए जहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, तो डेफिनेटली यू हैव टू डू अ सेशन लाइक दिस कि जिसमें आप उनके पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस करके उसके बिहेवियर का और उसकी जो भी एबिलिटीज है उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करें, और कोशिश करें टू अंडरस्टैंड के व्हाट एक्चुअली ही वांटेड टू। और सेशन लेने के लिए आया है या अगर आपसे वो मेंटोर बनना चाह रहा है, तो एक्चुअली उसका गोल क्या है, तो वो उस गोल के हिसाब से अपने आप को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अलाइन रहें उसके गोल के साथ ही। मे बी इफ यू आर कोचिंग और मेंटोरिंग स्टूडेंट्स, सो अगर वो स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मौजूद है, तो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू दिस फील्ड। और अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोचिंग में गए हुए हैं और वो उनका कोई सेशन ऐसे वो जो भी एक
ग्रुप है वो किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन से है, सेल्स से है, मार्केटिंग से है, डेवलपमेंट से है, या किसी से भी है. सो हैव यू हैव टू बी ट्राई टू बी अलाइन विद दैट, और आपको वो एग्जांपल्स और वो तमाम चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए, और वो तमाम जहाँ से वो आप उनको पिक कर सकें और वो आपके साथ अलाइन हो सके. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Although it's a very a very different subject to but obviously it's the human psyche, and psychology is very important in that. And और यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ. अगर आप, मैं मेंटोर हूँ और मैं किसी सेशन को लेने के लिए गया और मुझे ये कहा गया है कि यू आर सपोज टू स्पीक टू द पीपल, और इन द एंड दे माइट चूज यू एज ए मेंटोर. सो मुझे जो अपनी अगर इफ आई एम एक्चुअली अचीवर, और मैंने अपने पास कुछ ऐसी चीज़ों को अचीव किया है जो कि मैं उनको बता के उनको कन्विंस कर सकता हूँ और उनको अंडरस्टैंड करवा सकता हूँ कि यस एक्चुअली आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन और नाउ आई एम एक्चुअली ऑन दैट पोजीशन. सो इस तरह की सिचुएशंस को आपको लेके उनको कन्विंस करना है और अलाइन करना है, सो दे रियलाइज. और ट्रुथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दिस मैटर. आप किसी को जो है ना सिर्फ एक बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाकर जो ना बिल्कुल भी कन्विंस नहीं कर सकते, मेंटोर नहीं बना सकते, बिकॉज दिस ट्रुथ इज कमिंग आउट फ्रॉम यू. अगर आपके अंदर वो चीज़ें मौजूद नहीं है, सो वो चीज़ें उनको कभी भी इफेक्ट नहीं करेंगी. सो आई बिलीव के ट्रुथ और टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकी और उनका जो भी गोल है, उनको देखते हुए आप उनको अगर चीज़ों को ड्राइव करें, तो दैट एक्चुअली रियली हेल्प आउट. तनवीर साहब, मेरा इस पे आपने जो बात की उसमें मेरा एक सवाल है. मैं आप जब बात कर रहे थे मैं सुन रहा था और मैं सोच ही रहा था. आपने कहा कि आप अपनी सक्सेस बताते हैं, आप अपने अचीवमेंट्स बताते हैं. आपको ऐसा नहीं लगता, डोंट यू थिंक के इवन फेलियर्स टीच अ पर्सन अ लॉट, एंड Obviously, एज अ मेंटर true, इफ यू स्टार्ट very true, sharing your failures very with people very and you true. tell them कि आप ये Very चीजों में फेल भी हो चुके हैं, very that is true. more of an inspiration than success, because Very, success is like a dream. Do you इट्स agree वेरी with that? ट्रू, वेरी ट्रू. और मैं आपको अपना एक लाइव एक्सपीरियंस अभी शेयर करूं कि जी. आफ्टर experience of 22 or 23 years of profession, in this couple of months back, actually I learned a very strong message from myself actually, कि जहां मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, और और उसके मिस्टेक की वजह से मुझे कुछ नुकसान तो हुआ, वो एक्चुअली वो एक अलग चीज़ है. बट एक्चुअली आई रियलाइज माई सेल्फ कि यार ये तो इतनी छोटी सी बात थी कि अगर मैं निगोशिएशन में अगर मैं ये बिहेवियर नहीं रखता, सो डेफिनेटली वो सिचुएशन नहीं आती. सो दैट वाज ए वन ऑफ द बिग बिग फेलियर इन माय लाइफ, कि जहाँ मैं निगोशिएशन के अंदर मैंने कुछ चीज़ों को जो ना वो कंसंट्रेट नहीं किया, और एंड देन एक्चुअली दैट रियली रियलाइज मी वेरी स्ट्रांगली कि यार ये छोटी सी बात थी, मैं बिहेवियर को ऐसे नहीं ऐसे कर लेता. तो शायद तो एक्चुअली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फेलियर ऑल्सो प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट. और ऑब्वियसली जो फेलियर आप शेयर कर सकते हैं वो आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए. और ऐसे फेलियर कि जो कि शायद आपके ऑडियंस को अभी अंडरस्टैंड नहीं होंगे, तो वो ना करें तो अच्छा है. ऑब्वियसली वो आप पर्सनल में और दोस्तों में आप उसको जरूर शेयर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके फेलियर को हर कोई अंडरस्टैंड भी करे, ठीक है ना. तो बट वो ऐसे फेलियर जिसको आपकी ऑडियंस लोग समझ अंडरस्टैंड करे. सकें और उससे सीख सकें. एग्जैक्टली. सो बट ये कि अपने फेलियर्स को अपने दोस्तों में और अपने नियरेस्ट लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, बिकॉज कि उससे आपको भी एक हीलिंग मिलती है. और सॉरी, और आफ्टर सो मेनी इयर्स कभी कभी आप खुद भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, ओके आपके साथ ये बिहेवियर क्यों हुआ या आपने ऐसा बिहेवियर क्यों कर दिया. सो Agreed. फेलियर्स आर एक्चुअली, नो डाउट अबाउट दिस, इज द बिगेस्ट नो Learning learning curve. experiences. Exactly, no doubt. Zishan, intellectual difference between coaching and training. Coaching and training. So I'll tell you, मैं भी सारी बातें सुन रहा था. We all have to understand one thing as a foundation to the answer. कि mentorship is a 24/7 job then, huh? I don't know today, or let's take someone else as an example. Shazad doesn't know today
कि आज दिन में कितने लोग हैं जो उसको मेंटोर मानते हैं और शहजाद को पता ही नहीं है. हो सकता है, हो राइट? सकता सो और ये ऐसा होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, राइट? कि आप किसी सीनियर को, किसी को बेंचमार्क करके मेंटोर बना लेते हो, and how they do more than the work. Who they are is the impact that you are है, absorbing. क्रिएटिंग, या Yeah, so आप बेसिकली उस तरह का इंसान बन रहे हो, मे बी उस तरह का प्रोफेशनल नहीं बन रहे हो. This is a very या distinct या that comes out, right? So मेरा पहला है कि mentorship is got nothing to do with professional acumen. It's purely a human to human connection. कि यार ये बंदा यहाँ पर है, ये खातून यहाँ पे है, मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ. चाहता हूँ. That means I'll start walking like them. I'll start parking the car like them. मैं फोन पे उस तरह बात, और हम सब ने किया है. We've all been there. मैंने किया है. मैंने भी किया, राइट? कोच आपके सर पे बैठता है. Coach is not interested in you as a person. Coach is It's interested in you as a professional. कि आप इसको एक्सेल सिखा दो, इसको वर्ड सिखा दो, इसको प्रेजेंटेशन स्किल सिखा दो. वो आपकी सिर्फ स्किल सेट एनहांसमेंट के लिए है. वो आपकी ह्यूमन एनहांसमेंट में कोई ना उसका केपीआई है ना उसका काम है. और कोचिंग का सबसे जो मुझे मंडेन और आउटडेटेड एंगल लगता है वो है ट्रेनिंग. 20 बंदा को कमरे में बंद कर दो, 25 स्लाइड चला दो, एक एग्जाम ले लो. आपने बंदे को यही नहीं Train पता कि पूरे साल में उस रिसोर्स ने वो काम यूज भी किया या नहीं किया. हमारे साथ भी हो चुका है और हमने लोगों के साथ नहीं, किया. ट्रेनिंग का फॉलो बहुत कम होता है, एंड दैट इज. बट इंटेलेक्चुअल डिफरेंस क्या है कोचिंग और ट्रेनिंग में? कोचिंग इज केपीआई ड्रिवन. कि यार मैंने बंदे को एक काम सिखाया और उसका रिजल्ट ड्राइव कर दिया या उसकी एबिलिटी ड्राइव कर दी. जिशान को एक्सेल नहीं आता था सुबह तक, शाम तक उसको एक्सेल के 15 फॉर्मूलाज अब आते हैं. सो दैट्स कोचिंग. एक स्किल सेट सिखाया और एक केपीआई दे दिया. ट्रेनिंग इज कि जिशान को एक्सेल नहीं आता था, उसको एक कमरे में डाल दिया, 15 फॉर्मूलाज के बारे में बता दिया और एक सर्टिफिकेट उसको हाथ में. अब उसको आता ही नहीं आता, नहीं आता, या वो इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा. अच्छा, नहीं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोचिंग इज इट मैंडेटरी दैट any coaching activity should have a follow-up, should have a review, because there are KPIs? I'll tell you, in the last 7-8 months now, my opinion has changed. Okay. You got to teach, educate, or train in a manner that the resource wants to use that. You don't have to push it. I agree with you. I couldn't agree more. ऑफिसर है और उसको मैं फॉर्मूला सिखा देता हूँ. ये नहीं हो कि मैं रोज सुबह पूछ रहा हूँ कि यार फॉर्मूला डाला नहीं डाला. वो बोल रहा हूँ कि हाँ यार मेरी जिंदगी आसान होगी 15 फॉर्मूला से. Yes. So for me, the KPI is that आपने, even if you've taught them one line of something of efficiency or skill set enhancement, and if they use it at least once or twice a month, you have done a skill set enhancement. You haven't just done a training or coaching. That I couldn't agree more. Final comments from Tanveer Saab and then Zeeshan before we close the show. I mean, this topic is so vast that we need to have multiple episodes and multiple panelists on just to discuss coaching and mentoring, because this is a new concept in Pakistan, at least. Even for the world, where we see that this has become a new industry in itself. The training, the coaching, and mentoring. So, final words on this topic by Tanveer Saab and then Zeeshan. Thank you very much. अच्छा, it's very important. जो topic आपका ये is definitely we can talk a lot on it. And for youngsters and students especially, जो लोग अभी अपनी career की beginning में हैं, उनके लिए मैं अगर मेरे ऑडियंस में से वो लोग मौजूद हैं तो दे आर एक्चुअली रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी फॉर दैट सब्जेक्ट स्पेशली, बिकॉज के आप जिस स्टेज के ऊपर आप अभी मौजूद हैं वहाँ अगर आप अपने लिए बेहतर मेंटोर को सिलेक्ट करते हैं और आप उनसे गाइडेंस पूरी लेते रहते हैं तो दैट एक्चुअली रियली इम्पोर्टेंट. कोचेस भी आप अपने प्रोफेशंस के हिसाब से और अपने जो भी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के हिसाब से आप जो ना वो चेंज भी करते रहते हैं, बट एक्चुअली दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और अपने मेंटोर और कोच को
जो ना वो ज़रूर करें। हमारे एक कल्चर के अंदर, सूफीज़्म के अंदर भी आपकी मेंटोरिंग की बड़ी इम्पोर्टेंस है। आप अगर उसको जो ना अ, अगर देखें तो वो लोग इशारे जो जिन बैत किया करते हैं या पीर बन जाते हैं और जो अपने पीर और बैत के साथ जो ना वो चल रहे होते हैं, तो दैट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ मेंटोरिंग। तो वो बड़ा एक अच्छा सिलसिला है। लोग अक्सर औकात तो ये कहते हैं कि यार आपको जो ना वो किसी ना किसी से बैच होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कि आप उसकी गाइडेंस में और उसकी इंस्पिरेशन में चलते रहें। सो प्रोफेशनलिज्म में एग्जैक्टली ये वही एप्लीकेशंस है। यस, पाकिस्तान में शायद ये लफ्ज़ नए हैं, बट ये कि ये सब होता रहा है और लोगों को इससे बहुत फ़ायदा रहा है। हमारे यहाँ शायद रिलीजियस पार्ट पे ये काम बहुत होता रहा और लोग उसको बहुत फॉलो करते रहे, और समवेयर अदर ज़ाहिर प्रोफेशनलिज्म में और एजुकेशन में भी सब होता रहा। सो इट्स नॉट रियली न्यू Yes, थिंग। बिल्कुल। इनके अल्फाज तब्दील हैं, लेकिन इनसे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। कॉन्सेप्ट वही और है। और जिन लोगों ने अपने मेंटोर्स को सही से फॉलो किया है और मेंटोर सही सेलेक्ट भी किया है कि जो एग्जैक्टली आपको वहां तक लेके जा सकता है जहां आप चाहते हैं, और तो एक शुड बी अ गुड ह्यूमन। ठीक है ना? तो उन लोगों को बहुत फायदा हुआ, वो फोकस रहे अपने कामों के अंदर और अपने गोल के ऊपर, और वो फिर एक अच्छे इंसान भी बने और एक कामयाब लोग भी बने। तो दैट वेरी इंपॉर्टेंट। और इन वेरी चीज़ों को जरूर सेलेक्ट करें। आपने कल्चर को प्रोफेशन से कनेक्ट कर दिया और आपने ये साबित किया कि प्रोफेशनलिज्म में शायद अभी आया हो, लेकिन हमेशा से हमारी जिंदगियों में ये बिल्कुल, हमारे कल्चर कॉन्सेप्ट। में ये रहा है, और हमारे एशियन कल्चर में भी स्पेशली, या हमारे मुस्लिम कल्चर में भी, और उसमें ये सब चीज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसके अंदर बहुत अच्छी एग्जांपल्स मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि कभी ऐसा सेशन भी लेकर आएँ, जिसमें इसका नाम जो है वो मेंटोरिंग और कोचिंग से चेंज करके थोड़ा-सा कल्चरल लेकर आएँ, ताकि लोगों को थोड़ा-सा और बेहतर इसकी जो ना अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल, होगी कि हम कितना इंशाल्लाह वी विल इसको प्लान समथिंग ऑन करते दोस। करते रहे पहले। बिल्कुल। ज़ीशान, योर फाइनल कमेंट्स। I think Tanveer summed it up really nicely. But if I put something, I think yes, mentoring and coaching is as old as Aristotle himself. यस, So, जब से civilization बनी है, there have been people with experience. There have been people with wanting to learn that experience. So ये चलता रहेगा सिलसिला, और ये सिलसिला इवॉल्व होता रहेगा। जो अरिस्टोटल के टाइम पे था वो 18th सेंचुरी यूरोप में नहीं था, जो 18th सेंचुरी यूरोप में है वो 20th सेंचुरी एशिया में नहीं था। बट the drive to learn from someone that you are inspired by has always been there. My only thing is कि learning is two-way. यस, The True. experienced can learn from the inexperienced and vice versa. तो एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी दोनों साइड पे होनी चाहिए। मेंटोर सिलेक्शन पे मैं बोलूंगा कि यार जस्ट कीप वन लिटमस, if the person is a good human or a bad human, just keep that. And as you grow old in life, you will realize that some mentors you weren't really your mentors, you didn't like them, you don't want to become them, and that's fine. You know, it's okay to make mistakes. It's ट्रू, okay to make mistakes. It's okay to make decisions that you question 10 years down the road. मैं करता हूँ, आप दोनों भी करते होंगे। यार 10 साल बिल्कुल, पहले अगर ये पता होता तो मैं वो डिसीजन नहीं लेता। But I think what I'm trying to say is that life cannot be summarized in 5 or 6 rules. But the one rule for me that works is that here, if you are being a good human and the person that you're following is a good human, all else is okay. great. I think that's a final note, a very nice way to close this show. I will look forward to interacting with you guys again. Thank you very much for taking out Thank you time very much. on this important topic. Thank you for your time and your contribution. Hope to see you again. Thank you, Thank you everyone. guys. Allah Thank you very Hafiz. much. Thank you. Love. Assalamu alaikum.